आज हम बात करेंगे ट्रेंड 22 की, जो एक ट्रेंड एनालाइजर में ट्रेंड पकड़ने का तरीका है। इंट्राडे ट्रेडिंग में बुधवार में ट्रेंड 22 ने 208 अंक पकड़े। ये देखिए, 3 ट्रेड में 208 अंक आए। ये सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग में है। 3 ट्रेड किए इसने, 1, 2 और 3, तीनों ही मुनाफे में रहे। अब हम आते हैं शुक्रवार को। शुक्रवार को बाजार गैप के साथ खुला था, गैप के साथ काफ़ी ऊपर भी गया, लेकिन वो बात नहीं थी, जबकि कमाई उस दिन भी हुई है। 1, 2 और 3 ट्रेड हुए, लेकिन आप देख सकते हैं पहले 2 ट्रेड में कोई मुनाफा नहीं था, पर तीसरे ट्रेड में बहुत अच्छा ट्रेंड मिला। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम डिसिप्लिन ट्रेडिंग करते हैं तो कभी बुधवार जैसे दिन मिलते हैं जिस दिन 200 अंक मिल गए, कभी आज शुक्रवार जैसा दिन मिलता है जिस दिन 41 अंक मिला, और कभी कभी नुकसान भी होता है, लेकिन कुल मिलाकर डिसिप्लिन ट्रेडिंग में हम फायदे में रहते हैं। तो डिसिप्लिन के साथ, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो, वो साथ डिसिप्लिन के ही की जाती है। इस दिन आप देखिए, निफ्टी गैप के साथ खुला था, गैप के साथ खुला, फिर थोड़ी देर तक ये चौपी भी रहा, 1.5-2 घंटे। चौपी होने के बाद भी चूंकि हम डिसिप्लिन में थे, उसलिए ये अंतिम ट्रेड मिल गया और इसने कम रुपए कमा भी दिए हमारे लिए। ट्रेंड 22 captures trends in trend analyzer. 3 trades were done on Wednesday, which was a trend day. Later on, first trade, second trade and third trade. We were lucky when all 3 trades made money. The 3 trades made 208 points. That's a lot of money for an intraday trade. This is because we were doing disciplined trading, following rules. Now, when we follow rules, the important point is that we go with the flow of the market. This is again Friday. Friday is a day when a long gap up took the market continuously up. Now we made 3 trades, 1, 2 and 3. The first 2 trades actually lost money, but the third trade made money and compensated for the losses and actually added some more value to it. So it is the way market trades. Sometimes you get more, sometimes you get less. Here you got 41 points, and there on Wednesday you got 211 points. We don't know what will happen. The important point is we should just follow the rules that we make, and Trend 22 is a nice and proper way to follow rules. The market opened with a large up gap and still the trend made money. So that's only because disciplined trading was going on. So I made this video to explain why these setups must be followed diligently and